Internationally चे वुचान तकरीबन 10% कैंसर चे आसान तुम वरासती चे आसान 90% चे तुम human वरासती चे. The temperature of the tea which we drink has come down a bit. A notch. A bit. Maybe that's the one reason why our esophageal cancer incidence is coming down. Fast food ingredients also are not very healthy. Plus even the packages we know. They have biphenyls. And those are carcinogenic substances. God was one even as much surgery, pansavari, cancer, old age disease. Issue surgery, pansavari, patagasan. Magar uses Bushan Chipetmuki pattern, Yagar Tanvarians Katikaru, cancer to younger patients and must be very high. Every meat is not bad. Some people have a concept that Asko Badmaz Katmas Basuka gets cancer. No, that's not true. You cannot prevent death. But pain is not. Right? You cannot prevent death. But pain we can. अगर इस कशीर इन फूड स्पेसिफिकली कत करो सुबह नुन चाय पे शाम किस पतस तान बे लाइफ स्टाइल चेंज गसान पकुन कम गमु एक्सरसाइज कम गमु. Fish is excellent for our health. White meat is excellent. It's good for heart. It is good for us. It could be baked. It could be grilled, lightly fried. It's lovely. नाजरीन, आप सबका फिर से एक बार इस्तकबाल करते हैं कश्मीर लाइफ के सिलसिले द डॉक्टर्स लाउंज में. आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत जुड़ी हैं, डॉक्टर साहब जुड़े हैं जिन्होंने कश्मीर में कैंसर केयर की बुनियाद रखने में सबसे अहम रोल अदा किया था. डॉक्टर शाद सलीम साहब. डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैं वक्त देने के लिए. आप ऑन्कोलॉजी में आप 4 दहाइयों से ज्यादा एक्सपीरियंस है आपका. मैं बेसिक सवाल से शुरू करना चाहूंगा कि पिछले इतने सालों में कश्मीर में कैंसर के केसेस में और कैंसर के केयर में कितनी चेंजेस आई? Putna sajja wayo pethe kashir maz kya tabdiliya ye hai tuhun sawal ach donway and ki cancer bizati khud tat maz kya tabdili aayi cancer kis ilaj karnas maz kya tabdili aayi. Me shunti yaad pewan il bi godneti lati Britania phat wapas as medical oncology division et shuru 90% बीमार इसमें आसान तो मनोस आसान या कैंसर मेल जोन कैंसर या तो इसोफेगस या म्यादुक कैंसर या गैस्ट्रिक कैंसर चुना पति थिन लंग कैंसर पेशेंट्स तीन पति ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स तक मगर मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स इज आसान ऐसे अमल बहुत हैरान गसान कैजी इस कालस में निब्र काम करमस तो आसान एवरी अदर पेशेंट वुड बी अ पेशेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर और अ लंग कैंसर. Both were esophagus gastric. This was a new thing for me. As we can assume, cancer is nisbat kya chahiye the. Ki chuti gumut it par tomon dono sus ni brusha. Bone cancer, breast cancer, lung cancer, colon cancer. Omishi tit proportions mas tit. Hechas mas sui incidence it per tit common niki, but relative proportion just so. Esophagus was bone. Stomach was relatively bone. Yumkit, hurkon. Okay. तो सर कैंसर केयर अगर इस बात करो कैंसर केयरस में कौन चेंजेस आए कश्मीर में आया सो टेक्नोलॉजी से डेवलपमेंट तन पर कैसा फास्ट आया एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या रेस्ट ऑफ द इंडिया अगर इसमें कुदरती तत्व आई वारिया तब्दीली बोन था इस पे कैंसर किस इलाज में 4 इंपॉर्टेंट जुजू आसा इलाज बुशस न करान प्रिवेंशन या बचाव इस कत की सो बदल मसला बुशस करान इलाज इलाजस मन is the diagnostic pathway that was get pathology molecular studies वगैरह. Of course there have been advances. मसलन कश्मीर में एक खास टेक्निक आसान छु immunohistochemistry IHC सो न गसा कि मुझ कश्मीर में IHC थी अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टीट्यूट्स में गसा GMCS में गसा प्राइवेट्स में थरावन की इंडिविजुअल तुम ते करान बेशि बाकी युम कंपनी तुम छ एक्सेसिबल इथे पर पता अगर इलाज को मुझो सर्जरी तुमन दोनों जनरल सर्जन करानो ऑपरेशन आजकल स्पेशलाइज्ड सर्जन्स आमत यानी मुझे सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट अल्हम्दुलिल्लाह वही तथ में सुपर स्पेशलाइजेशन गसन मुझे कोलोरेक्टल सर्जरी अलग इत खुदा सवाल ब्रेस्ट सर्जरी अलग ऑर्गन बेस्ड सर्जन्स अम सद सुपर स्पेशलाइज गसान ओबियसली तुम करान इम्प्लीमेंट modern technology, modern knowledge, recent advances in the management of these patients. इथे पर medical oncology,
सो तमन दोन कहें मे शुरू कर तम नफर टोटल तज माशाला डिपार्टमेंट तक DM गसान तक रेजिडेंट्स रजिस्ट्रार्स बिग डिपार्टमेंट आजकल गसान बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन बाज़ाब्ते ट्रायल्स गसान रेडिएशन ऑन्कोलॉजी अल्हम्दुलिल्लाह तथ मे लीनियर एक्सेलरेटर तमन दोनों एक जाए आज दोन जाए यह कम खुसूसन रेडिएशन ऑन्कोलॉजी फैसिलिटी सदा कम मेडिकल ऑन्कोलॉजी पर्सनल वारिया कम तथ वजह कि पॉपुलेशन ते बढ़े कैंसर केसेस ते बढ़े सर वो ये कैंसर कत करान ज चीज हमेशा हर कॉन्वर्सेशन मज गो लाइफ स्टाइल तो बे गो फूड अगर इस कशीर फूड स्पेसिफिकली कत करो सुबह नुन चाय पे शाम किस पतस तान बे लाइफ स्टाइल चेंज गसान पकुन कम गमुत एक्सरसाइज कम गमुत अम सतन कोता बोड इम्पैक्ट पे कैंसर केसेसन पे अंद्राबी साहब यह बेहतरीन सवाल इवन यह गूज परस कश्मीर यूनिवर्सिटी सत बहुत कश्मीर ऑन्कोलॉजी फोरम सत वाबस्त मज कैंसर केयर डॉक्टर तमन कॉमन ग्रुप गो अम कत एहसास कि इलाज ठीक तथ मे अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हेकान कंट्रीब्यूट कर 10 पोस सही करान कह मगर सैनिस कौमस जरूरत बचाव अत पे करो तथ सिलसिलस मज कर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर सत सीरी तमन डिपार्टमेंट अल्ताफ साहब मे VC मोहतरमा बड़ इंतहाई कामयाब प्रोग्राम तम पे कोर ब्या प्रोग्राम ओत्रे पतम 2 हफ्त ब्रो इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऊंट पोर मकसद यह इंसान सुबह पे शाम तक एज यू राइटली सेड नुन चाय पे शाम बत तथ मज वन ऑफ माई टॉक्स आई गेव ए टॉक तथ मे नाव बियॉन्ड जनोम एक्सपोजोम as a cause of phenome genome go genetic makeup of a person इसके में बने हुए वरासत वन इंटरनेशनली वुचान तकरीबन 10% कैंसर तम वरासती 90% तम यम वरासती अगर तुम वरासती तेल इंसान ये जीन कचो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पकान अत क्या गो आंग मंगी So there is something which you rightly pointed out, since from morning lunch till evening dinner, something is happening to our body which is affecting this genome. Right. We call that exposome, which is coming from outside, to which we are exposed. That's much universe, whole universe. Ultraviolet radiation, climate change, fires, gasanchi, pollution, smoking, food habits, and what we eat, what we wear, what we live in, how much rest we take, as you pointed out, how much exercise we take, how much comfortable we are in our mind, how much restless we are. All these contribute to the effect of this exposome on this genome. It's cumulative. Okay. And there is one additional factor which we are recognizing more and more. That is called microbiome. In English language, microbiome को जरासीम क्या इंसान कुन जोन आमुत यथ आलमस मज कह तब वन अशरफुल मखलूकात यानी बे अल्लाह ताला बन चीज तुम सत मज जिंद कीम कृल प्लांट्स दिस आर पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स ये बच्चस जवान तमिस अल्लाह ताला थमज जनच वत जनान जाय वन कशर पे परवरदिगारन थोमुत माइक्रोबायोम तो जनान जाय मज यमिस बच्चे नेरान कशर पे गोडनुक गोल तमे मज चवान तमिस माइक्रोबायोम गसान अंदर सेटल विच फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ हिज बॉडी तुम गो ललदत तुम गो कुन प्राइवेट हस्पतालस मज तत वो कत्या बच्चे नॉर्मल वत जवान कत्या जवान सिजेरियन सेक्शन की सिजेरियन सेक्शन की जवान तुम कत मेवल माइक्रोबायोम they lack this microbiome वुचान बच्चन सिजेरियन डिलीवरी गसान तुमन मज इम्कान कि उमन गस कैंसर इंसिडेंट ज्यादा यह नो कंसेप्ट एंड वी आर सीइंग इट्स प्रोबेबली राइट इथे पे अगर बच्चस लक्ष्य एज मज एंटीबायोटिक्स दिन उमन बाकी माइक्रोबायोम दे आर इफेक्टेड अस इथे पे चीज करान इफेक्ट सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव सम नॉर्मल बैक्टीरिया इन आवर कोलन
तुम करन फूड मेटाबॉलिज्म अगर सो डिस्टर्ब गछ ये माज खान तथ हे पॉइजन बन अंदर सैनिस जिसमस मज अगर सो एंटी माइक्रोबियम गोमुत डिस्टर्ब सो वी बिलीव द बैलेंस अल्लाह ताला कुरान में वदा अल मीज़ान तम हसा कर बैलेंस क्रिएट यूनिवर्सस मज व्हेन यू इफेक्ट दैट बैलेंस it has its deleterious effects. Right. So, sir, you samuj story. Magar question root to it ati. Soon specific food use ch. Tad much three cheez agar as nimo. Number one is nun chai use chawan ch. Variya garam chawan ch. Number two use wazwan chawan ch with every kind of masala available. Ya fast food chawan ch with coloring agents and everything. So number three soon bihon. Umon tren cheezan se chaka. Umon tren cheezan chaka wabast with cancer. Specifically umon tren cheezan agar skat karo. John research गमशी ईरानस मज क्या दुनिया के सकिस तथ बेल्टस मज यत वन इसोफेजियल कैंसर बेल्ट सह ईरान किन पकान कशीर से सेंट्रल एशिया पे चीन किन जो पैरेलल लाइन उमन दोन पैरेलल लाइन मज इसोफेजियल कैंसर वारिया कॉमन कह चीज कॉमन अगर तुम पता समावार समावार सन इन्वेंशन की समावार सेंट्रल एशिया पे ताजिकिस्तान कजाकिस्तान किर्गिजिस्तान तक समावार अ वन समावार तुम तवान यह ग्रकवन चाय तवान ग्रकवन चाय मे बासान चूंकि समावार इस्तेमाल गो कम मुझे गरन में समावार कहीं तक थर्मास तथ मे ग्रकान चाय कहीं तथ मे गसान बट इट कूल्स आफ्टर सम टाइम बिल्कुल ठंड गसान कहीं पे समावार पे दिन ठंड यूं चाय राई सो इट वुड बी बॉइलिंग हॉट सो आई थिंक द टेम्परेचर ऑफ द टी व्हिच वी ड्रिंक हैज कम डाउन a bit. Maybe that's the one reason why our esophageal cancer incidence is coming down. But I am not sure that is the only reason. There was a research from Kashmir University many years ago, Professor Siddiqui was in biochemistry department. He published a very good paper at the development of tannins in Kashmiri tea, which is boiled in copper pots for hours together. Trawan which went the Allah Ta'ala din man majal Firdos was Fajr Bruh Trawan chai, but the Shabajet Devanta Ras. So that was challenge. As a result, you see him crush choasa in Banu that reacts with this tea at that high temperature. There's a chemical reaction which takes place. Maybe those tannins also affect. So high temperature, we know it is bad. Similarly, maybe certain substances like tannins. Magar Kashmiri Wazwan, the fast food, don't equate it. They are not same. Not equated. Okay? Kashmiri Wazwan is very good. Accepted. Only thing is excess of everything is bad. The fast food is different. Fast food ingredients also are not very healthy. Plus even the packages we know. They have biphenyls. And those are carcinogenic substances. So those can be dangerous for life because for people. They affect our endocrine system. Wazwanas mach excess of meat. As I told you, every meat is not bad. Some people have a concept that asko badmas ya katmas bas gets cancer. No, that's not true. There is no data that taking red meat in proper quantity causes cancer. It does not cause cancer. Neither does it potentiate. No, agar cancer is okay, but mass cancer. No, there's no data. A particular quantity of intake of meat is absolutely safe for us. There's no problem. Only thing is it should not be processed. What is dangerous is processed meat. Sumas, this double man wazwan, high content of salt. No, not frozen. These are like sausages. Okay. Those things like that, which are preserved. You will see this corned beef. It comes from Brazil. It comes from other places. Halal. Yes, halal. Probably halal, but this is preserved. So processed, preserved meat probably is dangerous. Should be avoided as much as we can. Okay. तो सर अब एक और टॉपिक पे आते हैं, कैंसर पेन मैनेजमेंट, जिसमें आप स्पेशलाइज भी करते हैं. व्हाट डज दिस फील्ड एक्चुअली डील विद, और जरूरी चीज आत्मजन आम पेन तो कैंसर पेन, अच्छा उन दोनों दरमियान का डिफरेंस. 2009 we started the first pain and palliative care center in Kashmir. This was in collaboration with IACA, an American organization. Alhamdulillah, tempat gayi
SKIMS also has a pain and palliative care center. GMC also has one. GLNM also has one, and I am very happy with that. There was a meeting. I had a meeting at that time. I invited some leading journalists just to improve the concept of pain control. I'll tell you why. I raised a slogan at that time. I said, cancer at the top, death is inevitable. Whether it's because of cancer or because of anything else. You cannot prevent death. But pain is not. Right? You cannot prevent death. But pain we can. Kashmir man's concept ki bemar gais doctor se gasun teli bemar temis ilaj kari. The doctor temis ilaj kari. Ilaj kari pad gais theek. Yet kya us gasan? Wo was ek do ekis professor sabase be GMCS mas medical college mas. I had a meeting with him. I thought temis kitna I Dr Shad Salim Akhtar. Oh acha varia mission as moj bemar. Oh temis achi cancer gais curious get khadmat. Right? What was that khadmata? Now, temis meadas cancer, temis as meadas thop, so ekne hazme karit. Ek khadmat kar temis bichot kares kya. There was no guidance as to what should be done. Yet doctor image kahan bemar of la ilaj surtas mas maybe because of cancer or because of any other condition, imis kariyo khadmat. But that person has pain. Temis shasa peshab band, board peshab band, locked peshab band. Temis draki iman. How to manage that? So I try to convey that treatment is not only for cure of disease. Ilaj shu khatir thi ki bemaras ke suhuliyat. Modern suppose, why should he die in pain? Why should he die in discomfort? Why can't he have a peaceful death? So that's not right. So that was my message at that time. Death is inevitable, but pain is not. Right. Pain we can control. Cancer pain is different. Which is the baki dag yushana karan kashpar edich. The machine is dag. Nachima isma gold, katasma crossfire player gold. So as mazma is nera mazas dag. Kashas andramas gasan zod andramuk dag. Badkismiti sanchu cancer man sarni tanan mas gasan. So it is in bone, it is in muscle, it is in your tummy, it is in patient's intestines, it is in patient's lung, it is in patient's skin, everywhere. So it starts pain everywhere. So there is bone pain, there is neuro pain, there is muscle pain, there is pain because blood vessels ragasan tomanti chipan. So as a result, the pain caused by cancer is multifactorial. Ishun akida ki Mr. Kunshasan disc disease. Temishu dag ke disc ki maji gasan daro band. Cancer se ti gasan disc disease. Edish futan nirata band. Magar pata san edish te futmats. Asan temish dag alag. Nervasa fasema so alag. Edish alag pata san yepe kin kunjay gardin mas gur. Tema asate rag ritmats. Temish dag alag. Okay. So cancer pain is a little more holistic, and we have to be more holistic in managing cancer pain. Okay. Well, sir, agar is karo cancer is godos one evan as but surgery pansaveri cancer is old age disease. Is surgery pat pansaver pat gasan. Magar use pushan chipet no ke horio pattern ya agar tahan variants kati karo cancer is younger patients and must be very evan mission. For example, pansa age, through age. Any reason kya root ki iman lactin naujawan mas ya ladkiyan mas ave cancer. This is $1 million question. I am very happy you are asking very, very relevant questions. Agar cancer is a disease of old age. There's no doubt in it. Agar is cancer incidence seta kam young bachan mazasa. You go beyond 50, 60, the incidence of cancer increases. Rate of cancer according to age. So graph is But as you pointed out, in the last 10, 15 years, we are seeing cancer in young people. This is a new disease. Ishun yeti youth ki. Mekor Kashmir mas mahsus. Ki ishushan yeti young patients with rectal cancer, bajpesha chinjai hund, rectamuk, colon, body andramuk, breast. At the same time, I realized that they are seeing the same thing in Europe. There is a transition
And this cannot all be explained because of genetic factors. It shouldn't sorry veracity ki. There is something which is in our environment which is causing this problem. One reason which we suspect is probably pesticides and insecticides. Maybe. Kaise tachu gasa exposure at a very young age. Agar tu gaumon kun guchu khuda sawal tu tichu ekdem jahin diti. Aschu variya plantation of apple trees. Tu yesu guchan gaumon man asan agar soont hu asi fairness nor kredit yokun. Atas ke asan chuk yordan chi iman garich khandarin temish asan kalas pet put os asan no as put tatme asan chai khoin man asan nichu. So asan zetre vor chama mi dod chama iti us asan chaka ye perkin dawa. Pachasan yorken gav git asan kokur ye pachasan kat. Tum jasa ye gas khama pati pesticide pe sui tre chama nale mi asan asan tatme asan ye pesticide. Shamas be git gav chama Dodas mans kus aab asan sui yat mans pesticides. Bachti chawai dod gilasan. So our life is contaminated with pesticides and insecticides. And to my amazement, when I looked at it, Kashmir is the #1 buyer of pesticides in 24-25. Some 11,000 metric tons or something like that. Which is exact number. #1. Okay. Sir, issue a board reason, बिल्कुल. वो करो इस big चीज़ का तो शो आज शो शान इस पर काट कर हर कोई चीज़ में दराव कहना का issue क्या इसके contamination, pollution, soon food. वो अगर इंसान इस पान पान बचाऊं इस cancer निश. अगर इस पानो fruit खेयो but for the ripening of fruits ताकि मुझे शिवान त्राण की ना किन चीज़ pesticide शिवान त्राण सब्जियां साइन बाकी चीज़न soon fast food चुगड़ नती खराब soon नुन चाय चीज़ ग्राहक नामान ज़्यादा. ऐत क्या रोड एक normal इंसान का dream सोच ठीक रोए सी. Nothing. I remember long time before I delivered a talk that was with the title "A Carrot a Day Keeps the Cancer Away." That was an interesting topic. When I finished at the end, that was Dr. Shad Salim Akhtar. That's a good question. I don't think that there's anything which we can do and we can say with 100% confidence that no, a person is not going to get cancer. You can live a healthy life. There's no doubt, and it's very good. We must live a healthy life. That means you should do exercise, vardish karinchi, balanced khan chukun, wazan dun zyada gasna, carbohydrates kam kin, protein theek kun, processed meat ne kun, a more of white meat, zyada tez masala ne kin, not much irritants, no contaminants, no preservatives, no additives, above all alcohol. And you people should talk about alcohol. You see, alcohol is #1 carcinogen. It is a #1 carcinogen. As bro Triveri Manan Westerners, a lot of debate was there. Agar Triveri cardiologist, oh good, alcohol is very good for heart. One small portion of alcohol every day protects your heart. But from 2023, they have come to what Quran says, right? When وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. Yet vices they are much larger than the profits. Profit chakui, so go monetary for it. There's no other profit for human beings. It is a #1 carcinogen. And we are not saying that publicly. Smoking is one, but you will not see a slogan cancer, sharab peene se cancer hota hai. Nowhere written. Right. It's not written. This is what we have to enforce. Alcohol causes cancer. Smoking causes cancer. We can stop these things. But there are things which you cannot prevent. So gasak never. Garden, diesel, petrol, these are fossil fuels. Right. These are very important carcinogens. They have a special particle size. We call those 2.5 micron particles. They are very abundant in it. Ammonia, forest fires, fossil fuels, they pollute this atmosphere. Ishi inhale karan. At particles chi capability that ichu gasan sani
शिशनार के मेम्ब्रेन मज अंदर because of its size. यह गसान नेंगलित GI tract म्यादस मज खेन चेन नलचि मज अंदरमन मज बड़िस अंदरमस मज यह गसान बे मज एब्जॉर्ब गसित यह सरसी जिस्मस मज फैलान and we know it's a carcinogen now. पता नहीं पता कि now from 2023 we have come to now. In 2025, वो through suspense endus was get research and they found that there is a substance, yeah, such a khas metal particle which is in fossil fuel, which is carcinogenic, and it has a relationship with lung cancer, breast cancer, colon cancer. Is there a way? There is a way only if there is intervention from the government. From the state, yes. We have electrical vehicles. We have vehicles running on pure renewable energy. Agar is fossil fuel bilkul band karo. It will protect our next generation. Is gay alud. Probably next generation will be protected. And we have to start working on it. And that's what you have to do. Right. Okay, sir, वो एस्कर खेन चन किस बारे में उसका बाकी चीज़ सवाल जो बड़ा ज़रूरी है पुछान वारियान डॉक्टर साहबन कि गाड़ चाक डिश यूस नॉर्मली यूज गसान च शायद कम गसान च एज कंपेयर टू रेड मीट या बाकी चीज़ हाउ इज फिश अगर इसे निमू फॉर ए पर्सनस बॉडी कैंसर वगैरह बाकी चीज़ फिश चाक असल डिश कि निशा खराब डिश एंड about its cooking as well कशीर में उसे शौक है इस हर चीज़ तलान to its extreme level तम से अच्छा का impact पे होने से deep frying is not good because touch we believe that when you deep fry things we generate carcinogenic substances, especially things like nitrosamines, which are dangerous for our gut. So deep frying is not healthy. It's not good for health. Anything, chahe usu gaad aise, oil aise, maas aise, deep frying does not. However, fish is an excellent food, but we have fish which is bred in farms. Okay? Is there a way to know what they feed them? Yeah. Does anybody control what is fed to the fish which we eat? Again, freshwater fish as asa. That much में एक मसला कि जिम्मे जिस पेस्टिसाइड्स करा use increase in quantity stream में जो सा सुरान दे रहा वैसे तब bunch guard चे क्या वास so marine नहीं because dose is very low मगर इनका साइम is जमा in mazas mas. Do we know how much pesticide is in fish meat? We don't know. Plus the fish which is grown in farms, what do they feed them with? Otherwise, fish is excellent for our health. White meat is excellent. It's good for heart. It is good for us. It could be baked. It could be grilled, lightly fried. It's lovely. Similarly, white meat in the form of chicken. But what do they feed chicken? What do they feed our chicken? What do they feed the sheep which we eat? Bros asan ese saran tatkia shwanan de perkin gamak me gumutimuk nawi mashit so porkin ishu gamak. Ese tatyanan kat. Tu mashit san janglas mas. Pohol asan pat bro es kat doran pat os pohol doran. Tu shan za ka pohol pe milaze fat. So san dos salan asan. Kat te salan asan. Azkal asan kat gai. Temis kya khyawa? Artificial feed. What is it made of? We don't know. That's what kya cheez tere we don't know. Kokra ni khyawan to kya feed. They are giving tachasali ki temse tara tool zyada. Temse se moti jaldi. We don't know how much steroids are given to them. तो इशू मतलब इशू में सर आखिरी सवाल पर सुबह कश्मीर में काफी टाइप के कैंसर्स पड़ते हैं बड़ा ब्रेस्ट कैंसर कोलोरेक्टल कैंसर इसोफेगस एंड स्टमक कैंसर एक नॉर्मल इंसानस जिस कशर छु तमिस क्या पाइज चेंज आउन वंकी पे पन्नी जिंदगी में टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम कैंसर Andrabi साहब चवने तो पाने मैं पे वन इज जरूरत है कोणती first of all there are things which are definite carcinogenic like cigarettes. Smoking is a very important carcinogen. It approach alcohol. A common cancer जो आसान मतलब हिंदुस्तान में जो ताचवना cervical cancer. चूंकि ऐसे मुसलमान में जो cervical cancer आसानी से टाक कम मासा कहीं कैसा infection कोई तरीक. Otherwise it is unknown because Allah Taala थो ऐसे आग खुद ना आके शु. It protects alhamdulillah rabbil alamin. ये चीज़ नियामत पनी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. बोन अगर का balanced life करी इख्तियार इत पर तो वो मुझे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम in every way
वुनिस सनिस एनवायरनमेंट तथ हेको थोप दित कहें कोशिश करो कि तथ मज गो न मुबतला कहें बे अगर कह सिगरेट तंबाकू चेवान गर चेन कहें मारून पन पान मारित अयालस मे मारित पैसिव स्मोकिंग बस मज मे चेन क्या तक बाकी शुर त गाड़ मज बाकी पैसेंजर त रेस्टोरेंट्स मज मे चेन कह जाए चेन ये सो एटमॉस्फेयरस पोल्यूट कर कहें इथे पे हुकूमत दीन नजर ऐसे यीचा ट्रक कॉन्वाय पकान तुम यूथा फ्यूम नेरान यह इनहेल वलित पहाड़ों सत यह रोजान सोरे सस्पेंडेड अच्छा पता अस कोता पोल्यूशन ये एटमॉस्फेयरस मज यह कित करो साफ अत खतर अत खतर गई तीन तरफ मूवमेंट गई एक्सरसाइज रेगुलर करें एक जाए न बिहन कह सीडेंट्री न रोजन कह चीज करान प्रोटेक्ट इथे पे अवॉइड हार्मोन्स खुश मेन माजन बेन रिक्वेस्ट कि दे शुड अवॉइड टेकिंग हार्मोनल थेरेपीज वट एवर द रीजन्स क्या तुम फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ मेलिग्नेंसी। ओके सर, थैंक यू वेरी मच वक्त देने के लिए हमें। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए द डॉक्टर्स लाउंज बाय कश्मीर लाइव।